Um, WhatsApp. So WhatsApp and all these applications that are there, they are almost a third-party app and software based. Huh. So these are easy to bridge. And of course, what you said is voice synthesizer and things that have already come in the form of AI and other tools. Uh, I see this on a routine basis in my own office as well, how we do things. And this is going to happen. In fact, over the next 10 years, this will be very well prevalent. Question is, is it possible, or do you guys have any kind of a use cases coming in your office as of now on bridging or taking a voice synthesizer over a telecom network, normal core technology network? Um, Basically, boss, we have very big limitations. Uh, I will only suggest two uses, two ways. Uh, because there is no technology to save this unless until you call back and find out uh, whether this person is genuine or not, or if he's using somebody's name, you have their numbers, you call them, because this the number from where the you will get the calls will not be the same which जो भी आपके दोस्त या near and dear ones का है वो नहीं होगा. They will be calling from some Uh, different number. right. So it is So easy to identify. So वहां पे bridge करना थोड़ा सा difficult है. हाँ, वहां ब्रिज Got it. करना काफी डिफिकल्ट है. Yes, Mhm. there are apps, there are apps where they use such things, but still there would be a difference of at least one number, one digit. There would be a difference. There are apps. I agree, there are apps. I have Okay. used it, so I know it. There are apps Mm, where there will be total similarity, but if you mm. see it properly, there will be a difference of one digit at least. So one of the probably the best way to avoid these kind of calls is over WhatsApp. In Yes. case you don't know the number over WhatsApp, just don't pick it up. Period. Yeah. Otherwise, you pick it up, but say, okay, fine, I'm sending you. You until unless you stop it, I cannot send it. Right. Got it. So you stop it, check that number through your own links, or call that Right. person separately or their family members. Whether this has happened or not, you'll get to know. And is there also some kind of a specific limit on, earlier days we used to talk about don't talk over 1 minute or 3 minutes it takes to kind of process the information back to the gateway. Has it been reduced now that it has come in below 15 seconds or with the, technology evolving? Is there any kind of a methodology that has come in, or you guys are still hovering around what all are the No, possibilities? still, the technology remains the same. But yes, Same. Okay. but I can assure you, within next 2 3 months, you'll get some new designs and technology because of this frauds increasing. Something is being worked out on data prevention. Something is being worked out. I cannot give the details, but because it is Yeah, I being understood. I understood. Yeah. but Understood. it is being Thank you. worked out, and I can assure you, within 3 4 months, we should get a result. Thank you. Thank you. Dada, Now, I have one question. Can I? yeah. Recently, Prahlad Singh Patel, the minister, Hmm. he received video call and then some nude messages and then sextortion kind of thing happened. Yeah. So if you can share that as an example also, it would be beneficial for rest of us. I left that sextortion thing because it is part of crime. It was not part of fraud. That's why I left it. But yes, those are this WhatsApp calls. It's not generated like that. You know, before coming to that, they will send you a WhatsApp message, good Chinese type looks and all. They will send you a WhatsApp, hi, how are you? What's up? Something like that. And once you're seeing that profile photo, and once you respond, then the video call comes.
And as soon as a video call comes, here though it is said you are recording that it is being recorded, there is nothing said. And they are in a half of that mode, and they will ask you to see, I'll get whole of this thing open. Please also, you also start it. And once for that, every person, oh, that very good. And once you start, they start recording it. And recording is done not of theirs. It is recording of yours only. That technology is there, where recording is for the opposite side only, who is doing it on the other side of the camera. And that recording they capture, and then they send it to the victim. Yes, this is your recording. So what do you want to give? So they will quote a price, but they will see, they will say, we'll delete it. But once anything is on a web, on net, it can never be deleted. You remember that. It can never be deleted. Very difficult to delete from anything from the web. Whoever are the IT experts would know, even after formatting, it can't be deleted. It can be deleted for simple persons. But an expert can find out everything. We do find out when we have taken out data from the computers or laptop which has been formatted 6 or 7 times. Then also we have been able to get the data. So that is what it is. Yes, sextortion is one of the big thing that is happening. That's why I said it is AI and WhatsApp call, video calls are very dangerous. And the only way is, if it is a known number, don't pick up before finding out who that person is, or check through other ways first about that. Have a fake Gmail ID where you can, and through that, go to Truecaller and check out if there is some details on that. That one of these ways I can tell you, open ways. Otherwise, there are many other ways. But not from your own ID. Don't go to Truecaller. Have a fake Gmail ID for you for this, a separate Gmail ID which you don't use for anything, don't sync with anything, and then you use that Gmail ID to find out from the Truecaller if there is some details about that person or not. But you remember it, your Facebook habits, your Google activities are all being monitored by various type of things, various ways, and you will certainly be looked into by the fraudster. The more easy things are going on, more easier for you to be on computer, the more easier for the fraudster to find about you easily. There are instances where the companies have been hacked, that with that emails, there is clients have been getting fake invoices. In fact, one of a very top company, I won't name that company because somebody might have been working on that company, in that company, lost around 23 crores through that fake invoices. Or hacking of individual means sending money requests to friends, that are open thing which we get. In that WhatsApp call, even without WhatsApp call also, the person sometimes they are so much expert in social engineering that they will call in a very typical voice, and you will, yaar main to aap kaise hain, they will know your title, and then aap kaise hain ji, Sinha ji kaise hain, and you will find, अरे आप कौन बोल रहे हैं, अरे आप भूल गए, पहचान नहीं रहे हो हमें, तो अब लोग, अच्छा आप शर्मा जी हैं, आप शुक्ला जी हैं, अरे वो करते करते देन ये विल से, अरे यार क्या, तो फिर आप अंत में आप कोई नाम बोलोगे, आप यही है लगता है, हाँ पहचान गया, आप यही हो, अच्छा हाँ,
Then they will say, अब मैं देखो प्रॉब्लम में हूँ और अभी 20,000 तुरंत चाहिए, मैं वहां गांव से मैं फंस गया हूँ, मैं आते ही आपको दे दूंगा. एंड अभी दे दो. यू विल से 5 मिनट दो, मैं करता हूँ. बोला नहीं नहीं नहीं, वो 30 सेकंड्स बाद ही फिर कॉल आ जाएगा, अभी दो, तुरंत दो, तुरंत. अगर आपने उस टाइम भी मना कर दिया, then they will not call you. They will never call you, because now they know you are trying to find out exactly whether I am true or not. So they will not call you. अगर जो फंस गया, सो गया. मिसलेनियस फ्रॉड्स में आपको हम बताने जा रहे थे, क्रिप्टो करेंसी का हायर रिटर्न्स का स्कैम बहुत आ रहा है, और क्रिप्टो का आपको ऑफर्स बहुत आते हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट कर लो, इसमें ज्यादा पैसा आ जाएगा, ये आप कर लो. प्लीज डोंट गो इनटू दैट. क्रिप्टो इज नॉट अ रेगुलर करेंसी इन इंडिया, एंड यू माइट बी इन अ प्रॉब्लम इफ यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. प्लीज. लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन लॉ पकड़ लेगा उस दिन बहुत मुश्किल में आ जाएगा. सभी क्रिप्टो एग्रीड नहीं है. इनफैक्ट आपको याद भी होगा कि वजीरेक्स, वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो का जो साइट था, उसके मालिक और उसको उस पर केसेस चल गए, एंड दे वर इन ट्रबल. मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम ऑन हायर रिटर्न्स इन क्रिप्टो करेंसी, that is one of the scams where they will try to motivate you to invest in cryptocurrency to get higher returns, and many IT experts have lost money in that. Recently, Telangana police have arrested a gang wherein around 5-6 persons who worked in Cyberabad in an IT company had been lured to invest in crypto and lost around 50.7 lakhs. So, however, they were caught. Now, the new one is that fake CBI, ED, IT letter frauds. They somehow know retired persons or the retired persons or old aged persons above 50. They target these type of persons with this law, or very young persons who don't understand the ED, CBI and judge things. They are given fake letters. यार यहाँ पर आपका केस चल रहा है, आपके अगेंस्ट में ये वारंट है, और ये देखो जज का एक लेटर आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ये देखो यहाँ चल रहा है. But if you go through the letter, you can know कि this cannot be the court order or court direction. जिस लहजा में लिखा होगा, उनका स्टैम्प बहुत परफेक्ट होगा, स्टैम्प फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो ऊपर का हेडिंग बहुत फर्स्ट क्लास होगा, लेकिन लेटर का जो जूस होगा, जो मिडल होगा, the court always directs anything. Court will direct. It will be a very simple thing. It is not that it will just request कि हम ये मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग करेंगे, ये सब कभी नहीं होगा. It will be a direction. You appear on this date. It is you are convicted. You are accused in this case. Finish. और केस का डिटेल्स होगा. Similarly, fake CBI, ED का लेटर्स आते हैं कि आपके अगेंस्ट में ये केसेस बन रहे हैं, आपके केसेस में ये बन रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करो तो आपको हम बचाएंगे. And then you get trouble with this. Easy way out is to check it with Truecaller, or check with the numbers, or check the numbers which have been given. You will find it out very easily through Google or Truecaller that they are the fake ones. Recent में fake SMS बहुत आ रहे हैं. Your SBI account is suspended. Your light will be cut out in the night. आप call करो ये numbers और वो numbers. These are the new ones of fake SMSs coming out. So beware of these things. Banks never give any number. There is bank numbers are very different. Never it is a 10-digit mobile number. That is the basic. You can see that it is something, even SBI type something, BP, OSIB, SBI, something like that. So it looks similar to SBI, and they will give you a form or something like that, okay? And you are gone.
Now, this SIM swap fraud. I was talking about the bank. How do they control your bank? This is one of the biggest way which is happening to control the big bank accounts, not small bank accounts. The big bank accounts, where in the big bank accounts which has more than 20 lakhs. The cases have come into light where such SIM swap fraud has happened for bank accounts of more than 20 lakhs. Where through various social engineering, various ways of phishing of your data from Facebook, Insta and all, तुम्हारा अकाउंट डिटेल्स मिल जाता है, पर्सनल डाटा मिलता है. They create a fake ID, Aadhaar ID or something, contact the mobile operator and keep phone lost हो गया, and they will deactivate your old SIM, get the deactivation of your old SIM and issue get a new SIM card. The fraudster will get a new SIM card, and with that new SIM card coming, they will start getting authentication code, OTPs, everything from the banking, and your whole of the amount gets back. Now, in these cases are very dangerous. There is, sorry to say, बहुत ज़्यादा protection इसमें नहीं है. Only way is that as soon as you find your SIM is not working, suddenly as you find your SIM card is not working, आपको ऊपर में आ जाएगा सिम कार्ड नॉट वर्किंग का, वो आ जाएगा कि सिम में क्रॉस आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, ऐसा साइन आ जाएगा कि आपको पता चलेगा कि सिम नहीं वर्क कर रहा है. पहला तरीका होता है कि नहीं वर्क कर रहा तो आप रीस्टार्ट करोगे, ऑन ऑफ करोगे. अगर उससे भी नहीं हो रहा है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द सर्विस प्रोवाइडर, द नियरेस्ट वे, कि भैया देखो ये क्या है चक्कर है. They will immediately check out on their computer whether new SIM has been given or not. And और आप दूसरे के फोन से भी चेक कर सकते हो, अपने बगल वाले अपने फ्रेंड का फोन लो, सर्विस प्रोवाइडर का, और सर्विस प्रोवाइडर कॉल करो, and they will be able to help you out कि whether ये सिम नया हुआ है या नहीं हुआ है. They will give you, customer care can give this, and then file a police complaint against the service provider and unknown persons. Unknown person would be found out by the police perfectly, and many cases have been solved through this. बट अगर वो दूर चला गया है, कहीं जंगलों में चला गया, जैसे जामताड़ा गैंग, और वो राजस्थान में वो नू मेवात में चला गया, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट वन. इनफैक्ट इन तेलंगाना में भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर पुलिस के लिए जाना बहुत मुश्किल है. तो दैट इज वन ऑफ द वेज, बट अदरवाइज दे विल बी कॉट. आई एम श्योर दे विल बी कॉट. नाउ टारगेट ऑडियंस एंड विक्टिम्स मोस्टली ये लोग हैं, जॉब सीकिंग स्टूडेंट्स, पीपल विथ स्मॉल बिजनेस, एजेड पर्सन्स, रूरल वुमेन, थोड़ा सा रूरल टाइप जो है, जो कम जानती हैं, लेस एजुकेटेड एंड नॉट मच टेक सेवी मेन एंड वुमेन, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स, एंड द न्यू टारगेट इज द IT सेक्टर इंडिविजुअल्स who are looking for extra bucks, plus the investment seekers who continue searching on Google for various investments. Now, we have come to preventing measures. Every bank's website basic is money saving. Every bank website or app has these things: enable, disable, set transaction limit features. Please use this feature judiciously. There is on and off features for ATM, for point of sales, for online transactions, for other transactions, contactless transactions, everything, UPI transactions, for everything there is enable, disable features. Please use this. Normally, when I go, for everything, as a precautionary measure, I disable everything. Whenever I go for purchase, I use a card. When I go to the app, enable it, use it, come back, again disable. I certainly use this, and I will request everybody to think about it. That simple thing I said,
bank accountants can ensure that fraudsters do not swindle money. User can disable, modify the daily transaction limit. Please modify it. Whenever you need extra money, please, you can enable immediately and get it. Daily transaction limit, set it to 10,000, 5,000, whatever you want. Whatever. If you have, suddenly you need 40,000 for a transaction. Enable it and get the transaction done. So your ATM, POS, card transaction, everything is there. You can use that. This enable disable features, agar you use it, even if the card number OTP is shared unknowingly, amount will not be siphoned from the bank. Now a new case has come where for Aadhaar enabled payment services in West Bengal and recently in Telangana and Odisha, these cases have come to light. Aadhaar enabled payment services. Many of the banks are using Aadhaar card as their with the thumb impression. They are opening the bank account, and in such a bank account, people are suddenly getting to lose money without knowing, because they don't get any OTP, they don't get anything, and if they don't see notifications, so they will know it after when they check their account. There has been cases in Odisha when the lady got to know after 3 months that her account is zero. Now, what has happened that whenever you go to some land deals, you give your thumb impression on the आप कागज पे thumb impression देते हो, सब कोई देता है. They get that thumb impression. कभी कभी सिम कार्ड लेते हो या कुछ भी लेते हो, वहां भी इनकी सेटिंग होती है. वो क्या करते हैं, एक आपका वो लगाएगा कि भैया वो लगा देते हैं, आप थंब इंप्रेशन दे दो, और दोगे वो कहेगा यार ये काम नहीं कर रहा है, ये दूसरा लगाता हूँ, गड़बड़ हो गया, एंड वो हटाएगा, दूसरा लगाएगा, उसमें आपका काम कर रहा हो, आराम से हो जाएगा. लेकिन ऐसा आया है केसेस जहां पर वो जो आपने जब पहला थंब जिसमें दिया था वो रियली में काम कर रहा था, बट वो डिफरेंट ढंग से काम कर रहा था. उसमें पहले से एक और वो सिस्टम लगाए हुए था उन्होंने, जो वो रीड कर रहा था आपका, और वो लेकर के एक दूसरे जगह भेज रहा था. वो आपका थंब इंप्रेशन लेके भेज रहा था, और वो लेके भेज दिया, लेकिन वो असली आधार पे वो काम नहीं किया. वो कैसा काम था, आपका लेकर के भेज देना, तो वो उनके लिए काम किया. सेकंड थिंग वाज, जब दूसरा कार्ड लगाया तो आपका काम कर दिया. दूसरा जब वो एनेबलर लगाया वो काम कर गया, अपना काम खत्म. आप तो ध्यान नहीं दिए, हो सकता है खराब होगा, बट दैट वाज ए डाटा थेफ्ट मैकेनिज्म. वो डाटा थेफ्ट वो बेचते हैं. कहीं कहीं ऐसा हो सकता है जेन्युइन कॉज हो कि वो आपका सही में मशीन खराब हो, बट देयर आर केसेस. इनफैक्ट उड़ीसा में ये केस लैंड से नहीं आया था, ये उन्होंने 1 महीना पहले एक सिम लिया था और वो आधार एनेबल्ड था, एंड देन दे उसमें वो वहां से डाटा चोरी हो गया. बंगाल में जो हुआ था वो लैंड डाटा से हुआ था. तो आधार अपने आप में बहुत सहूलियत लेके आया है, बट प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है. अभी तक हमारे पास एक ही ऑप्शन है इसका कि आधार ऐप आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और कहीं से नहीं. UIDAI के उसमें है, उसमें से आप डाउनलोड करें, वहीं से डाउनलोड करें, और उसमें एनेबल डिसेबल का फीचर है बायोमेट्रिक का, यूज. रूरल कस्टमर के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है. आई होप समथिंग इज कमिंग आउट बाय UIDAI which is looking into these frauds. They have received these frauds complaints and they are looking at some system where by calling a particular number this can be done, enabling and disabling can be done. But अभी वो नहीं हुआ है. अब कितने दिन में होगा I have no idea, but till that time this is the only safe thing is आधार ऐप. जिनके पास अगर आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज है, प्लीज डाउनलोड आधार ऐप and use enable disable biometric features. Redressal mechanism अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नहीं है साइबर क्राइम में.
एक है 124/7 कॉल सेंटर 1930, जहां आपने कॉल किया तो इमीडिएटली वो बैंक ऑथोरिटीज को चला जाएगा फ्रीज करने के लिए, फ्रॉड्स ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए। जितना रोक सकेंगे वो रोकेंगे। उसके बाद रिकवरी का प्रोसेस है वो बैंक करेगा, पुलिस करेगी, पुलिस को भी चला जाता है। वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास चला जाएगा कंप्लेंट, और वो आपको एक लिंक देंगे। उसमें कंप्लेंट आपको जब वहां कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और आपके मेल पे एक लिंक आएगा जिसपे आप पूरा कंप्लेंट को डिटेल्स भर सकते हैं, पूरा डाटा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसमें आप कर सकते हैं, या यू कैन गो टू cybercrime.gov.in. Once it is reported in cybercrime, you can अनिमेश, पुलिस डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, यस नहीं करेगा, बट जब आप यहाँ कंप्लेन करेंगे, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेल में कंप्लेन करेंगे, अगर पकड़ा जाएगा, देखो साइबर क्राइम पकड़ना बहुत कठिन है, पुलिस तैयार नहीं है आपकी, बहुत कम ट्रेन्ड पीपल है। इनफैक्ट तुमको फैक्ट बताऊं कि मैं कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग पे गया था इस तरह का, एंड आई कुड फाइंड आउट ट्रेंड बहुत कम है, वो जनरल क्राइम के लिए ट्रेंड है, साइबर क्राइम अभी बहुत बहुत पीछे है, तो उनको टाइम लगता है। देयर मे बी इवन 2 to 3 years. In fact, I can tell you a case known to me, a very senior people from my department, whose son का 25,000 का लॉस हुआ था, एंड पुलिस को 3 साल बाद वो खोज पाई। बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो पैसा इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था कि धीरे धीरे करके देन दे कुड फाइंड आउट, एंड वो 25,000 वापस आया, मास्टरमाइंड आज तक नहीं पकड़ाया। तो अनिमेश टाइम लगता है, बट रेस्ट बी अश्योर्ड, टाइम रहेगा। वंस द पुलिस इज ऑन जॉब, स्लोली एंड स्लोली इट विल कम। साइबर क्राइम सेल को जाएगा, पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन कुछ नहीं करेगी, साइबर क्राइम सेल है हर जगह, हर पुलिस स्टेशन के कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर वो करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, कुछ एरिया है बिहार और मतलब जहां पर साइबर क्राइम पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, वहां दिक्कत है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू, व्हेन वेस्ट बंगाल पुलिस इज वेरी एक्टिव नाउअडेज ऑन साइबर क्राइम। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज भी उनके लिए भी नो गो है, वहां जाके क्राइम को पकड़ नहीं सकते हैं, क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन बैंक के थ्रू कुछ पैसा आपको जरूर वापस मिल जाए। That's why I said complaint transfers to cyber crime police station of the jurisdiction, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा एक उपाय है कि जब ये अगर आपको 5-6 महीने में कुछ नहीं आता, तो ये कैन लॉग इन टू पब्लिक ग्रीवांस सेल, और वहां इस कंप्लेंट का रेफरेंस देते हुए कंप्लेंट कर सकते हो। इट ओनली हेल्प्स यू इन, वो फास्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प करता है। जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन में तुमको स्टॉप करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ध्यान रखो, ये बहुत लोगों के पास नहीं होता है, मुश्किल से ये फर्स्ट 6 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट ऑफ द एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड ये नहीं होता, या अकाउंट नंबर भूल जाते हैं। जिस ट्रांजैक्शन रेफरेंस का है वो देना जरूरी होता है, कितना अमाउंट लॉस हुआ, डेट एंड टाइम, ये डिटेल्स चाहिए होता है। ये डिटेल्स कहीं ना कहीं तो आपके पास होना चाहिए, तभी आसानी होगी थोड़ा फ्रॉड को पकड़ने में। That finishes my lecture. If anybody has any question, please come up. Dada, it was a brilliant session. Thank you very much, sir. दादा, बात आपसे हुई नहीं, congratulations for the police medal. Thank you, sir. Thank you. Good one, Manoranjan. Thank you. Thank you very much. I hope it helps people. Hey guys, what happened to the money that lot of guys transferred to a particular guy in an account, Praktani से? हम लोग हाँ? किए थे last year, remember?
हाँ Manoranjan, I don't think, Mano, I don't think you know it. हम लोग बहुत आदमी दिए थे एक बंदा को अपना विद्यापीठ का ही। I know that. हाँ, हम लोग पैसा दिए थे, फिर वो बंदा टर्न्स आउट टू बी अ फ्रॉड। उसका कुछ किनारा हुआ अपने साइड में? अरे यार देखो, वो बंदा फ्रॉड था ही शुरू से। वो था विद्यापीठ का, लेकिन फ्रॉड था, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। और अब उसको निकालने के लिए साइबर फ्रॉड नहीं जाना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको पर्सनली लगना पड़ेगा और पर्सनली वो मिल जाएगा। वो सोशल एक ग्रुप में मिलेगा दादा, वो सोशल ग्रुप में मिलेगा आपके। नहीं, मैंने देखा है वो क्राइम, वो जिसने किया था वो भी जानता हूँ, और जिसने बदमाशी किया था उसको भी मैं जानता हूँ, तो मैं अच्छा से जानता हूँ। तो उस केस में यू हैव टू पर्सनली कैच दैट गाय एंड फाइंड आउट। हाँ, वो अनट्रेसेबल है, आई बिलीव। बहुत उसका अपना गट्टा पकड़ बंदा के लोग ना, भी टेस्ट किया। कॉलर पकड़ के निकालना पड़ेगा। हाँ भाई। और बता भाई, किसी को और कोई क्वेश्चन? उसका उसका कॉलर ही नहीं मिल रहा है। चल मैं खोजता हूँ। I think Rishida has one question. Rishida, you may come forward and ask the question yourself. यस दादा, कोई भी नया वेबसाइट जाते हैं, मैक्सिमम स्पोर्ट्स वेबसाइट पे खासकर, वो सब जरूर न्यूयॉर्क टाइम्स और जो इस तरह का वेबसाइट है वो बोलता है पहले सर, कुकीज एक्सेप्ट करो। बॉस, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। So I will read it for you, Rishida. I will read your question for everyone else. So Manoranjan da unka question hai, Dada, if we accept cookies, which is being asked on various websites, can it directly impact anything? I remember you saying that it helps them in collecting my data use pattern, so nothing directly. So कुछ देखो, कुकीज पे जब भी आप करते हो, आपका यूज पैटर्न और डाटा तो जाता है। ये दुनिया में हर वेबसाइट यूज करता है आपका डाटा। इवन गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी कुकीज के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट में, इनफैक्ट एमटीएनएल भी आपसे जब मांगता है ना, आप देखोगे कि एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगता है, बोलता है आप एक कैप्चा भरो। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कुकी, कि आप जैसे ही भरते हो, इट हेल्प्स इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डाटा। तो डाटा तो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखो कि whether you are using it on HTTPS or non HTTPS। नाउ नॉर्मल जो न्यूज डाटा है, एडवर्टाइजमेंट डाटा है, न्यूज में अगर आप कुकीज भर रहे हो, तो यस, इट हेल्प्स इन फ्रॉडस्टर नोइंग यू व्हाट थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर। बट ये नहीं कहता है, लेकिन उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो अगर न्यूज पढ़ना है तो हमको कुकीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट द बेसिक थिंग रिमेन्स सेम। We have few only preventive measures. That basic thing please remember. अगर आप remember करते हो, तो I can guarantee you आप कभी भी फ्रॉड में नहीं फंसोगे। बेसिक थिंग, द OTP, द QR कोड, जो भी कोड आता है, अगर आपको वो पता है कि ये हमको नहीं करना है, तो नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप नहीं फंसोगे। यूज एनेबल डिसेबल फीचर्स, आप सच में बचोगे। आपको सही बता रहा हूं, बचोगे, नहीं फंस सकते हो। मतलब इट विल बी 0.001%, अदर देन नो। मनोरंजन दा, या अंकल बोल रहे हैं। इससे पहले हम लोग की यूनिवर्सिटी में गुजरात में जो है, वहाँ पे साइबर सेल गुजरात का लोग आके ये लेक्चर दिया था, ठीक है। पर आपका लेक्चर वाज मोस्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। एंड टू द पॉइंट, एंड एक्चुअली क्या करना है वो पता चल रहा था। तो मेरा रिक्वेस्ट हुआ कि अगर कभी यूनिवर्सिटी को चाहिए होगा इस टाइप का लेक्चर, वेदर आप दे सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन, क्योंकि फैकल्टी स्टूडेंट सबको, बिकॉज क्या है कि वो साइबर क्राइम वाला आया था, बट वो बहुत सेंसेशन वे में बोल रहा था, वो मतलब उसमें मजा नहीं आ रहा था। तो और दे वर ऑल कंसल्टेंट्स टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। बट इसमें क्या क्या एक्चुअल करना है, दैट्स व्हाट वी नो। सो ये बहुत ही इफेक्टिव था, बहुत ही हेल्पफुल। तुम ना उससे ले लो, एंड यू नो थिंग्स, यू कैन गिव द लेक्चर। Use that data and give the lecture. If any question, you can call me up from that side. I'm talking to expert,
मुझसे पूछ लेना, मैं उसी समय जवाब बता दूंगा। दादा इनेबलर हैं। थैंक यू। नहीं, अभी मैंने एक जगह लेक्चर दिया था, सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स। मैं इसीलिए साइबर फ्रॉड पाया मैंने कि मैं उसमें से बहुत चीज हटाया हूँ जो मैंने लेक्चर यूज किया था। अभी मैंने एक सीबीआई में जाके दिया था सीनियर ऑफिसर्स को ये लेक्चर, उनके एकेडमी में जा करके। एंड मतलब फ्यू फैक्ट्स, मेरे पास भी ये डाटा कहीं से नहीं है। इट इज ऑल कलेक्टेड फ्रॉम, I can tell you frankly, from Sardar Vallabhbhai Academy, from Haryana Police, Telangana Police. It is about the crimes, the case studies. I have studied around hundreds of case studies और उनका investigation, and then from that I have found out the basic things. और बेसिक जो, अगर आप बेसिक एटिक्वेट्स फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी कि आप फंसोगे नहीं, आप फंस के भी निकल जाओगे, आप लॉस नहीं करोगे। तो फंस तो हर कोई सकता है, लेकिन फंस के उसमें से लॉस होना इज द बेसिक थिंग। आप लॉस बचाओ, फंस जा सकते हो लेकिन लॉस बचाना है। लॉस बचाने का बेसिक क्राइटेरिया ये 4-5 है, उसको फॉलो करो, कभी नहीं फंसोगे, कभी आपका लॉस नहीं होगा। फंसना तो है, इसमें गारंटी नहीं है, किसी ना किसी दिन हो सकता है। वो जो अभी बता रहा था ना, कोई पूछ रहा था वो कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ गया तो क्या होगा, उसका तो वो तो अचानक से आ गया तो क्या करोगे, कुछ कर नहीं सकते हो। रिसीव कर लिए, गलती तो कर दिए, लेकिन अगर आपने वो बेसिक थिंग्स फॉलो किया है, नो तो नो, तो आपको कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और बेसिक डाटा दूसरा, जो फेसबुक पर है, आप लोग डाटा रखते हो, फेसबुक इंस्टा पे डाटा रखते हो, देखो कि इट हैज टू बी ओनली फॉर योर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। बेसिक डाटा खाली हो सकता है देख लें, बट योर अपडेटेड स्टेटस, अपडेटेड थिंग्स ओनली आइदर फ्रेंड्स शुड सी और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शुड सी, उससे ज्यादा लोग ना देख पाए, ये ध्यान रखना। मनोरंजन दा, मुझे एक चीज में पूछना है। अभी हम लोग जैसे डिजाइन का काम करते हैं, ठीक है, फर्नीचर का डिजाइन का काम करते हैं, उससे मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। हम लोग का आज के समय में ना 50% वर्क जो है इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहा है, एंड इसीलिए हम लोग को पब्लिक रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्क अब एक्चुअली बिजनेस उससे हो रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है बंद करना, मतलब नहीं,